जी बताइए। I am bringing first part for compliance of time. हाँ There is two part of the order, my lord. जी एक पार्ट के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ समय के लिए, एक पार्ट पिटिशनर को बोला था साहब आपने। लिखिएगा श्री Manas only prays for and is granted 4 weeks time to make compliance of order dated 2 weeks time to order dated 19/3/2024 list in the week commencing 29 April 2024. I had to continue. I had to continue. My Lordship. हाँ बताइए। So on the last date of hearing, the notices were issued to the respondent. रिप्लाई नहीं आया अभी, आपका क्या बात है? सर अभी वो रिस्पोंडेंट अपीयर भी नहीं हुए हैं अभी। Who is the respondent? सर मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड MPP. लिखिएगा none for the respondents despite issuance of notice. Notices be given to Shri Utkarsh Agarwal who usually appears for Madhya Pradesh Purv Kshetra Vidyut Vitran Company Limited. He may seek instructions and file reply within 2 weeks. List in the week commencing 6 May 2024. My Lordship, एक सबमिशन और करना था। During the proceedings, mother of applicant has been diagnosed with cancer as well. तो उनके treatments को लेकर के भी अभी प्रॉब्लम हो रही है। अभी वो आयुष्मान योजना के अंतर्गत कॉपी दे दीजिए, एडवांस कॉपी दे दीजिए, आपको जल्दी से मैं करवा देता हूँ प्लीज। Obliged. But its reply has been filed. हाँ Reply has been filed, my lord, in both of the cases, 64 and 64.1. That this issue has been decided. Current charge officer cannot hold departmental inquiry. हाँ The current charge officer has given charge sheet and he has initiated the inquiry. In the final, कहाँ है वो ऑर्डर? My lord, that order is on record. That is, these are two orders. My lords have also passed an order. on page 125 of my petition, my lord. वही बात है। हाँ वो लगा है वो। This case is that petitioner who is holding the substantive post of Assistant engineer, my lord. assistant engineer was given a charge sheet by the in charge. My lord, But they have not challenged the charge sheet. my lord, my lord, the charge sheet was given by the, my lord, officer who was competent. Thereafter, my lord, the executive engineer who was, my lord, posted in current charge, he, my lord, appointed the inquiry officer and completed the inquiry. Charge sheet was issued by the competent authority, but thereafter executive engineer who was in charge, chief general manager, appointed the inquiry officer and the presenting officer. Therefore, the order of appointment of appointing inquiry officer and presenting officer by an incompetent authority deserves to be set aside. Full stop. Impugned order dated 19/9/2022 passed by Shri Amritpal Singh, in charge Chief General Manager BR, is hereby quashed. Respondents are given liberty to proceed in the inquiry from the stage of appointment of the inquiry officer and the presenting officer, and if possible, complete inquiry within period of 6 months from the date of communication of this order. Now, petition is disposed of. In the collected matter, हाँ collected में उसमें charge sheet भी गलत है। हाँ और मेरे वाले। 64.1 में लिखिएगा चार्ज शीट हैज बीन गिवन बाय एन इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और फिर ये कॉपी करके पेज 2 का क्वेश्चन कर दीजिएगा चार्ज शीट को with liberty to issue charge sheet in the hands of the competent authority. P3, P9 and P11 would be satisfied. कर लीजिएगा P3, P9 and P11 But I only have one submission because this issue of statutory delegation of power was actually has been discussed by this division bench of this honorable court. Lord. If my lord may have a perusal of annexure R7. जी बताइए क्या कहा उन्होंने? Lord, page 47, my lord. जी And the relevant portion is from page 50. Lord, here was also of the issue that a person who was on current charge had suspended an issue, had suspended an officer, and there the same pleading was taken that since he was on current charge, this could not have been done. हाँ कंसीडर कहा कि जो ये तो हम देख चुके हैं
जो हमने सब कंसीडर किया वो कंसीडर ही नहीं किया डीबी ने। चलिए फुल बेंच भी कंसिडर होता चलिए नेक्स्ट केस। हाँ बोलो। Please, Your Lordship. In the morning itself, we have received the reply of the state. I am humbly praying a week's time to file rejoinder. Raise for and is granted 2 weeks time to file rejoinder list after 2 weeks. May I humbly pray, Your Lordship, a week commencing may be given. Week commencing 13 May 2024। Your Lordship, can it be 22 April because there is a slight urgency? I have been reverted back to the position. 29 अप्रैल कर दीजिए। चलिए Humbly oblige, Your Lordship. By Lord, last order sheet, the collector was directed to file affidavit and it has been filed, my lord. Hey, Affidavit was directed to be filed on issue that how appellate authority can pass the order regarding termination of services of the बताइए रोजगार। क्या कहा कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने ये कहा कि उस समय हमको पावर था सर्कुलर का एक हवाला देते हुए, हाँ इसलिए हमने ऐसा किया था हाँ फिर और एक सर्कुलर लगाया जो कि ट्रांसफर से संबंधित है, उसको कोट करते हुए उन्होंने बोला कि इससे ये बाकी की प्रोसेस चेंज की जो कि सर्कुलर गलत है। सर्कुलर इज annexure R1। Annexure R2. R1 is the circular by which he is saying that I have power, and by annexure A2 हाँ he is claiming that by this annexure he has exercised the power. ये बताइएगा पढ़िएगा A2। A2. यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की प्रारंभिक जांच पश्चात इस बात का समाधान हो जाता है कि शिकायत आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, तो ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रकरण में जांच आदेशित करेंगे। हमारे प्रकरण में कोई जांच नहीं हुई है, सीधे कलेक्टर की ऑर्डर शीट है, उन्होंने बोल दिया इनको हटाया जाए, हटा दिया गया। ऑर्डर पास हुआ है, ये है 5/10/23 से। 5/10/23 से अगर ये पॉलिसी प्रभाव में आ गई थी तो सीओ जिला पंचायत को उसमें जांच करनी चाहिए थी। उसके बाद सीओ जिला पंचायत को अपने स्वयं का विवेक उपयोग करते हुए उसमें आदेश पारित करना चाहिए। आपका आदेश इज annexure Annexure P1 and I have annexed detailed order sheet, my lord. तो 20/12/23 का है। हाँ 20/12/23 का है और वो जो हमने अभी सर्कुलर पढ़ा वो 5/10/23 का है। हाँ ये सर्कुलर प्रभाव में आ गया था, ये आप भी कह रहे हैं। कैसे कॉम्पिटेंट है बताइएगा ना। My lords, as per the A1, my lords, the permission has been taken by the collector and CO Jila Panchayat has been passed the order, lord. And lord, my lords, may kindly see. In para number 3, my lord, we have already stated in the that where approval is required for collector concerned district program coordinator or accordingly as per the prevailing procedure in that in case of petitioner, my lord, prior approval of collector was taken in accordance with law. इस ये जो कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जो सब्सिक्वेंट आया है उससे संबंधित हमने कोई अप्रूवल नहीं लिया। नहीं लेकिन नोट शीट है पेज नंबर 55 में, माय लॉर्ड में काइंडली अप्रिशिएट। तो नोट शीट भी सर आप देखेंगे वो उसकी डेट देखें। हाँ जी annexure Annexure P11 पेज नंबर 55। हाँ क्या लिख रहा है पढ़िए। ये कलेक्टर के लास्ट की 6 लाइन, चूंकि प्रभारी सचिव की का कर्तव्य था कि ये पेज नंबर 55 की लास्ट की 8 लाइन पढ़ रहे हैं ना। हाँ लास्ट 8 लाइन। तो पेज 60 लगा हुआ है। पेज 55 भी है 55। 5/4/23 का आदेश है ये। ऑर्डर शीट है P11 नहीं है फिर वो P10 की ऑर्डर शीट। हाँ P10 जी चूंकि प्रभारी सचिव पेज नंबर 55 लास्ट 8 लाइंस। जी क्योंकि प्रभारी सचिव का कर्तव्य था कि अपात्रों को राशि अंतरित ना हो, बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके लिए निश्चित ही तत्कालीन प्रभारी सचिव जिम्मेदार है। अतः संबंधित ग्राम रोजगार सहायक को इस अवैधानिक कृत्य हेतु शासन के परिपत्र 21/1/21 अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाकर सेवा समाप्ति किया जाना उचित होगा। आप ये पहले निर्णय ले लिए नहीं सर, ये सेवा और इसके एक सॉरी इसके बाद की ऑर्डर शीट है ये उस समय की है। माय लॉर्ड में काइंडली कम टू पेज नंबर 58 जी क्या लिखा 58 में। ये 27 अप्रैल के ऊपर है। पूर्व पोस्ट क्रमांक 7 में दिए गए निर्देश के अनुक्रम में संविदा समाप्ति का निर्देश है।
इसके बाद ये सीधे नीचे अगर देखा जाए 21/11/23 के ऑर्डर शीट में उपरोक्त अनुसार आदेश का लास्ट में प्रारूप तैयार कर हस्ताक्षर प्रस्तुत है। उसी डिसीजन से इन्फर लेते हुए पेज नंबर 7 ही है, हमें ये नवंबर में ऑर्डर शीट लिखे और लास्ट उसके बाद 59 पेज में 5/12/23 को अनुमोदन लेकर के कोई इसके बीच में नए सर्कुलर के अनुसार सीओ जिला पंचायत ने कोई ना शो कॉज नोटिस इशू किया ना अपना माइंड अप्लाई किया, सीधे उसी के आधार पे हमको हमारे पद से हटा दिया गया। सीओ जिला पंचायत का एप्लीकेशन ऑफ माइंड कहाँ से मालूम पड़ेगा? ऑर्डर पे अगर वो लिखें कि मैंने इनको कारण बताओ सूचना दी, इन्होंने जवाब दिया, इनके जवाब का अवलोकन किया, वो संतुष्ट नहीं है, या वो लिखें कैसे मालूम पड़ेगा? पेज नंबर 54 फिर से देख लेते हैं। 54 फिर से देखें। इसमें आप शुरू से पढ़ेंगे सर। हाँ पढ़िएगा। श्री आशुतोष तिवारी ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत पचकोर जनपद पंचायत गंगेव द्वारा अपात्रों को आवास योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में अनुतोषणात्मक कार्रवाई किए जाने बाबत कृपया उपरोक्त विषय अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंगेव के पत्र क्रमांक दिनांक 26/10/2022 के द्वारा ग्राम पंचायत पचकोर जनपद पंचायत गंगेव के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रेषित विषयांगत की जांच नोडल अधिकारी आवास सीपीओ के से कराई जाकर जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र हितग्राही को लाभ दिया जाकर राशि 4.80 की वित्तीय अनियमितता किया जाना प्रतिवेदित किया गया। मुख्य कार्यालय अधिकारी जिला पंचायत रीवा के पत्र क्रमांक 7698 दिनांक 31/10/2022 एवं कार्यपालन पत्र क्रमांक 8190 दिनांक 22/11/2022 के द्वारा श्री आशुतोष तिवारी ग्राम रोजगार सहायक को कारण बताओ सूचना पत्र क्या उत्तर दिया इन्होंने और जारी करते हुए किया, ये तो बता दीजिए। इनका उत्तर कहाँ कंसीडर किया? स्पीकिंग ऑर्डर जो होगा उसमें ये लिखेंगे ना कि उत्तर में क्या कंसीडर किया। इसमें सर उसके दूसरे पैरे में लिखा है सर, श्री आशुतोष तिवारी ग्राम रोजगार सहायक प्रभारी द्वारा दिनांक 11/11/2022 को जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब के अवलोकन किया जाने के उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के पत्र क्रमांक 100 दिनांक 27/10/2022 के द्वारा प्रस्तुत जवाब मूलतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की ओर भेजकर अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन चाहता। ऐसा है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की शो कॉज नोटिस एक जना जारी करेगा? एक सर इसमें डेलीगेट पावर जो अनुमोदन लेने का है सर वो A1 में लिया है सर। पेज नंबर देखें आप सर, पेज नंबर 5। A1 किसका? आपके एफिडेविट A1 का? हाँ जी, एफिडेविट का A1 का पेज नंबर 5 पढ़िएगा। 5 नंबर ये इसमें सर मैं ऊपर से दूसरा पैरा पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़िए। उक्त का समाधान करने के लिए ग्राम रोजगार सहायक की सेवा शर्तों में उल्लंघन के अलावा दंड प्रावधान क्रमशः चेतावनी पुनरिंदा नो वर्क नो पे के आधार पर मानदेय का स्थायी रूप से रोका कार्य पूर्ण तक किया जा सकता है। उपरोक्त अनुसार कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वय के अनुमोदन उपरांत दांडिक कार्रवाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी आपने कौन सी दांडिक कार्रवाई करी है? क्या दांडिक कार्रवाई की है आपने? My lord, P1 P1 से क्या किया आपने? My lord, में कर ली My lord, the recovery order has been अब इसमें क्या दिया हुआ है? ये इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है? पेज नंबर चेतावनी परिनिंदा नो वर्क नो पे के आधार पर मानदेय को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। कलेक्टर की अनुमति से क्या कर सकते हैं आप? रिकवरी कर सकते हैं क्या? आप ही ने पढ़ा था ना अभी अपना दस्तावेज। नहीं, इसके ऊपर वाला भी सर एक बार पढ़े। उसमें ये तो अलग से दी गई थी, वो जो अनुमोदन वाला मैं वो पढ़ रहा था। परिषद के संदर्भ में पद क्रमांक 1 में ग्राम रोजगार सहायक उनके द्वारा हस्ताक्षरित अनुमोदन पत्र में शासित होता है एवं दंड स्वरूप उनके सेवा समाप्ति का प्रावधान किया गया है। कई बार ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा छोटी छोटी त्रुटियां होने पर ये उस चीज अगर कोई त्रुटि छोटी है तो उसकी सेवा समाप्ति डायरेक्ट नहीं की जाएगी, लेकिन सेवा समाप्ति तो कर सकते हैं। नहीं वो तो ठीक है, इनकी सेवा कहाँ समाप्त की? आपने तो रिकवरी का आदेश पारित किया। सेवा समाप्ति भी की, रिकवरी भी की। तो सेवा समाप्ति के लिए क्या प्रावधान है? प्रिंसिपल कौन अप्लाई करेगा? दिमाग कौन लगाएगा? कलेक्टर साहब लगाएंगे दिमाग? नहीं, कलेक्टर साहब नहीं। तो कलेक्टर साहब तो अगर ये जो छोटी छोटी पेनल्टीज देनी है उसके लिए कलेक्टर साहब की अनुमति चाहिए जी। नहीं, और इसके लिए भी सर चाहिए। नहीं, तैयारी कर लीजिए, इसको परसों रखते हैं। मैं देखो और देख लेता हूँ सर। श्री Saurabh Soni prays for and is granted weeks time to prepare and argue this case. आपका 22 को आ रहे हैं?
वेडनेसडे को मालूट, एनी वेडनेसडे मालूट। आ जाएगा लिस्ट ऑन 24 अप्रैल 2024। फिर आपने एक दिन फिक्स किया हुआ है यहाँ पर, वेडनेसडे एंड थर्सडे ऐसा क्यों करते हैं? वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हैं? आपको हाई कोर्ट का वकील बनना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील बनना नहीं, है? बनना तो यहाँ का है तो फिर आप ज्यादा समय वहां दे रहे हैं। नहीं, वहाँ 2 दिन दीजिए, यहाँ ज्यादा समय दीजिए। जी। चलिए। Requesting 4 weeks time to file reply. 4 weeks time to file reply. List after 4. हाँ, My lord, the difficulty is, my lord, in this petition, my lord, what we are seeking, my lord, to execution of the circular dated annexure P5, my lord. हाँ, By which, my lord, it has been decided by the authorities to give the charge of higher post to the deputy range forest officer, my lord. And after filing this writ petition, my lord, जी, the only 86, one list has been issued by the respondent department, giving the promotion to the deputy range forest officer, whereas, my lord, total 430 posts are lying vacant. So my submission is, आप my चल lord, रहा है, इनको बोल देते हैं कि कंसीडर my- करके that is my submission. petitioners only grievances that petitioner is working on the post of Deputy range forest officer. deputy forest ranger. Charge of the post of forest ranger is to be given as per seniority. Petitioner falls in the list of seniority and as much as 430 seats. Seats are lying vacant. Seats of ranger Promotional post, my lord. of promotional posts of ranger are lying vacant. Respondents have issued only a list of 87 persons. 86, my lord. 86 persons. Full stop. This petition can be disposed of, directing the respondents to issue list of remaining persons within period of 30 days of receipt of certified copy of the order. Chalo. Okay. Strictly in accordance with law and merits. Sorry. And the norms so framed in this behalf. So the matter relate to the recovery as a punishment, Lordship. I just received the brief by my associate counsel. That's why I'm praying it possible it could be taken on 13. Neeraj Singh Chauhan prays for time to prepare and argue this matter. List after a week. I'm so good. Number 69. Sir. हाँ, बताइए क्या ले आए ये? Lordship, paper book along with case laws. ये तो फाइनल हियरिंग थोड़ी ना हो पाएगी वकील साहब आज। 1/17 तो ऑलरेडी हो गया है। जी सर। Case is to be heard finally, list for final disposal. Sir. In motion hearing on, Any Tuesday or Friday, sir. हाँ, दे रहे हैं on 3 मई 2024। चलिए Obliged, Lordship. वापस कर देना है पेपर को। Number 70. Number 70. My lord. PK Sharma. जी, Pleading complete termination matter annexure P2. किसका टर्मिनेशन है? सहायक परियोजना समन्वयक के पद पर नियुक्ति हुई थी, इसको भी 2000। प्लीडिंग्स आर कंप्लीट, केसेस टू बी हर्ड फाइनली। कोई 3 मई दे दीजिएगा, 3 मई 2024। चलिए रिटर्न आर्गुमेंट फाइल है हमारे मेरा रिटर्न आर्गुमेंट फाइल है। हाँ ठीक है, कर दीजिएगा। पेश हमारे पहले पेश है हाँ, सुन लेंगे जी। ओब्लाइज। 71. Sunil Kumar Pandey. Looks, I'm praying 2 weeks time. We have to seek instructions from the party. फ्रॉम दी Party. Respondent number 5. श्री। Respondent number 6. None for the petitioner. आपका शुभ नाम बताइए। Raksha Patel. Raksha Patel prays for and is granted 2 weeks time to seek instructions from the party. List after 2 weeks. जी, Number 72. Number 72. So, क्या है सर ये? रिकवरी मैटर। रिकवरी ऑफ रिटायर्ड ड्यूज। यस मैम। हाँ, अंडरटेकिंग कहाँ है? अंडरटेकिंग इन्होंने फाइल की है, दैट इज अनडेटेड अंडरटेकिंग।
हाँ कब की है और ये अंडरटेकिंग है इनकी हाँ R1 अनडेटेड है R1 ठीक है अनडेटेड ठीक है और जो इंडेमनिटी है एक्चुअली जो फुल बेंच जजमेंट है उसमें बहुत स्पेसिफिक लिखा और जगदेव वाले केस में भी है कि बिफोर द एम्प्लॉय इज पुट टू द नोटिस दैट रिकवरी कैन बी मेड बट 2006 का पेमेंट है कोई ऑर्डर भी नहीं है कि एक्सेस पेमेंट हुआ नो नोटिस नो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग वेदर एक्सेस पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट लिखिएगा respondents to bring on record documents to show that how excess payment has been calculated to have been made in favor of the petitioner. Let a specific affidavit be filed within 2 weeks, list thereafter. Serial number 73. Charge can सर वो पिछली बार इंडेमनिटी की डेट गलत उसमें ऑर्डर शीट में आ गई थी देख लेंगे 2016 की है वो इंडेमनिटी जो इन्होंने 2006 बता दी ठीक है चलिए देख लेंगे This case, my lord, there is no Guruji. हैं At present, my lord, there is no post of Guruji available. My lord has directed to take instruction on dated 22/6/2024. हाँ गुरुजी की कोई पोस्ट ही नहीं है लाट से गुरु जी की पोस्ट मिले लेकिन लाट से के नंबर P8 देखने लाट से उसमें कहा था कि आप इनको जो है एक मिनट लाट से P8 पेज नंबर 57 लाट से किसके साथ फाइल किया P8 आपने लाट से ये है अलग से पिटिशनर पेश किया था लाट से कब किया है एक मिनट लाट से ये आईए नंबर लाट से 2434 9/3/15 को लाट से मिल नहीं रहा इसको let copy of the documents as were filed on 9/3/2015 जी लाट से be brought on record list thereafter be placed on record by the registry list thereafter serial number 74. The petitioner is filing the instant writ petition agreed with the inaction on the part of the respondent because they are participated in the teacher eligibility test in the middle school teachers and they are qualified the same role. But till now the respondent has not classified and declared the post. Therefore, they are debarring for selection mode. The contents, the view of the respondents are contained. This notice is waived by Shri Manas Mani Verma. He will file reply within 4 weeks. List thereafter. In a week commencing. Week commencing 20 May 2024. My lord, petitioner claiming benefit of fourth pay scale as per the circular, my lord. He completed 35 years of service, my lord. When did he complete 35 years of service? My lord, he completed, my lord, after when, my lord, this is, my lord, annexure P1 is, my lord, his superannuation, my lord, letter. And he submitted representation before the authority. Circular is, my lord, annexure P2, which provided, my lord. Only contention is that he is entitled to fourth time scale of pay in terms of GAD circular dated 14 August 2023 for persons. Full stop. It is submitted that petitioner had completed 24 years of service and has attained 35 years of service and has attained age of superannuation on 31/1/24. Therefore, in terms of annexure P2, his case is required to be considered. ठीक है? My lord, by annexure P3, my lord, the authority was forwarded the proposal to the, my lord, competent Annexure authority. P3 proposal has been forwarded to the competent authority. कौन है competent authority? Competent authority is, my lord, chief engineer one. Full stop. ये चीफ को 15 दिन में रिप्रेजेंटेशन देंगे, वो 30 दिन में डिसाइड करेगा थ्रू स्पीकिंग ऑर्डर. चलिए. हाँ मौजूद. number 71. Why making selection for the bank cadre
और समिति Which प्रबंधक cadre? Which cadre? बैंक कैडर में हाँ समिति प्रबंधक हाँ Lord, the list of unfit candidate was issued जी and objections were invited from the unfit candidate. जी Lord, as per Rule 6C, Lord, before taking final decision, the opportunity of तो ये hearing तो वहाँ पर सर्विस मैटर 55(2) में जाएगा. यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बंद हो गया क्या? for the अरे वहाँ जाएगा ना ये Lord, for कोऑपरेटिव the सोसाइटीज एक्ट में restricted 55(2) में जाएगा. इट्स अ सर्विस डिस्प्यूट. only to provide opportunity of hearing, Lord, this has been तो filed. वहाँ जाके ले लीजिएगा. किसके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग चाहिए आपको? क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग चाहिए? Opportunity हमने जो आपत्ति लगाई है बस उस पे सुनवाई कर दी जाए. कौन सुनेगा? सब रेस्पॉन्ड नंबर 4. Petitioner's contention is that respondent number 4 be directed to give an opportunity of hearing to the petitioner before deciding the objections as have been put forth by the petitioner. This innocuous prayer is not opposed. 15 दिन 30 दिन this court has not expressed any opinion on the merits of the case. चलिए. Yeah. माय लॉर्ड, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का मेरिट पे हमारा सिलेक्शन हो गया है. अब हमारा 2020 में हमारे खिलाफ एक 498 की FIR हुई थी जो हमारी वाइफ ने लगाई थी. 2022 में हमको डिवोर्स भी मिल गया है और ये एक्विटल हो गया आपका? नहीं हुआ, यहाँ से स्टे हो गया. उसको जब आपकी वाइफ से डाइवोर्स हो गया तो 482 लगा के क्वेश्चन करा लीजिए. 482 लगा हुआ है, कनेक्टेड है. Who's appearing? 482 में आपकी वाइफ पार्टी है? पार्टी है. आई हैं क्या आज? 82 में वो तो नहीं आई वाली. Issue notice to Notice respondent हुए number हम. 2 by both modes. Within माय 3 लॉर्ड, days. हैं? 15 तक हमको ज्वाइनिंग करनी है. तो मैडम कैसे हो जाएगा? सरसों पे आप मैडम, जाकर सर्व कराइए उनको. 13 तारीख को रख देता हूँ मैं. सिंपल डायरेक्शन कैसे दे देंगे? क्रिमिनल केस आपके खिलाफ चल रहा है. आप या तो उसकी क्वेश्चन कराइए. 13 तारीख को इतने 13 जल्दी तारीख को रख देते हैं हम. जाके हमदर्द तामील कर लाइए इनके ऊपर. देखिएगा नोटिस थ्रू हमदर्द मोड फॉर विच स्टेप्स टू बी टेकन टुडे टू सर्व द रिस्पॉन्ड नंबर 2 श्रीमती मनिका पांडे. मणिका मनिका ही तो लिखा है, MANIK मनिका पांडे. लिस्ट ऑन 13 अप्रैल 2024. मतलब 13 टॉप ऑफ द लिस्ट. वकील साहब बाहर हैं, उनकी बच्ची तबीयत स्वस्थ. आपका शुभ नाम बताइए. टीपी जायसवाल. टीपी जायसवाल. TP जी. TP Jaiswal submits that arguing counsel is out of station and prays for time. On his request, case is adjourned. चलिए next case. Kumar Gupta. None for the petitioner. Pleadings are complete. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in part B of the cause list as per its turn and seniority. But replies awaited, my lord. रिव्यू का क्या रिप्लाई होगा? रिव्यू में आप बताइए किस आदेश का रिव्यू चाह रहे हैं आप? अनेक्षर जी. But I am praying for next week, my lord. नेक्स्ट वीक नहीं होता वकील साहब. आज केस मुकदमा लगा है. My lord. आपको बताना पड़ेगा किस चीज का रिव्यू चाह रहे हैं आप और इस ऑर्डर में क्या गलती है. Next week. My lord, I have no file, my lord. हैं? File नहीं है, my lord, अभी. हाँ, शुभ नाम बताइएगा. अंकेश मिश्रा. हैं? अंकेश मिश्रा. Ankesh Mishra submits that he is not carrying the file of the case and prays for adjournment. On his request, case is adjourned. List after ensuing summer vacation. Kumar Gupta. My lord,
5/3/2024 को ऑर्डर हुआ था और काय का? इन्होंने जो पेमेंट किया है एक्चुअल पेमेंट को उसका कोई वो नहीं दिया। हाँ? इन्होंने जो रिप्लाई दिया है उसमें पेमेंट कितना करना चाहिए इसका ब्यौरा नहीं दिया था, तो उसी के उसमें ऑर्डर हुआ था रिस्पॉन्डेंट। Let compliance of the order paying dated 7 days time. 5/3/2024 be made within 10 days, list after 10 days. चलो हो गया टाइम, चलो।
रीडअप फाइनलाइजेशन की रिक्वेस्ट ले रहे आप 71 से नहीं ले रहे 71 ऑनवर्ड्स वाले नहीं ले रहे
During the competition, उस पर ही ये बाबू साहब रेगुलर हीयरिंग नहीं लेके क्या regular hearing. नहीं रेगुलर हीयरिंग उसके बाद Final hearing, serial number 124, along with connected case. कहाँ है आपके वकील साहब? वकील साहब कहाँ है? वो तो सर ईद की वजह से कोई कंफ्यूजन था ये, तो वो आ नहीं सके सर। उनको ये नहीं था कि छुट्टी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। देखिए उनको बुला लाइए, यही कर स्टार्टेड कब ले आएंगे आप? वो डेट दे देते हैं ईद की। थोड़े से जो पिछले पॉइंट रह गए थे वो थोड़े में क्लियर कर देता हूँ। नहीं ऐसा आधे आधा नहीं होगा, ये जुगलबंदी नहीं चलेगी। या तो ठीक है ना, पहले वैसे मैं शुरू में सर पिटिशन पर्सन ही अपीयर हो रहा था। ठीक है, आपके वकील साहब ने उस दिन बहस करी है, उनको ले आइए। कब लेकर आएंगे बताइए और तारीख बता दीजिए, उस तारीख को लगा देता हूँ। 30 दे दिए सर, 30 अप्रैल के दे दी। 30 अप्रैल तो मंगलवार है, एक मई दे देता हूँ, बुधवार है। पर उनको टाइम 30 का है सर, उन्होंने स्पेशल लिख के दिया 30 तक। नहीं उनसे बात कर लीजिए, बोले एक मई, 2 बुधवार गुरुवार जो लेना हो ले लें। ठीक है सर, एक ही दे दीजिए। एक ही कर दीजिए। पूछ लीजिए उनसे आप पहले, कहीं ऐसा फिर मैं दोबारा नहीं बढ़ाऊंगा। पूछ लीजिए उनसे, पूछ के बता दीजिए। ठीक है सर। Serial number 71.
24/1/8 का कहाँ है सर्कुलर एनेक्शर? कहाँ है सर्कुलर 24/1/2008 का? सर नहीं उसमें एनेक्शर जी नहीं है, फाइल नहीं। P1 लॉर्डशिप सर्कुलर डेट P1 पढ़े, इसमें पेज क्या नंबर लिखा है? 9। पढ़िएगा इसको। यह संशोधित योजना 1 अप्रैल 2006 से प्रभावशील होगी तथा इसका लाभ उन सिविल सेवाओं के सदस्यों को उपलब्ध होगा जिनके लिए पृथक से कोई विशिष्ट योजना प्रभावशील नहीं है। ठीक है, फिर ये 1 अप्रैल 2006 से प्रभावशील थी। क्या सब्सिक्वेंट पॉलिसी बनाकर आप क्या इसको सुपरसीड कर रहे हैं? इसमें कहाँ लिखा है कि ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सब इंजीनियर पे लागू नहीं हो? कहाँ लिखा है इसमें? जो आपने अपने रिटर्न में लिख दिया है, तो ऐसा कहाँ लिखा है इसमें, इस स्कीम में? नहीं लिखा सर। जी और 24/1/2008 में कहाँ लिखा हुआ है कि ये जो है, सॉरी 18/7/2008 में कहाँ लिखा है कि ये अतिक्रमित करती है 24/1 के प्रावधानों को? संदर्भ मध्य प्रदेश। यह आदेश जारी होने के एक सेकंड के निहित प्रावधानों के तहत निम्नानुसार समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए। ठीक है, के तहत कहाँ लिखा है इसमें? लिखिएगा, दिस पिटीशन इज फाइल्ड, none for the petition. This petition is filed being aggrieved of order dated 29/6/2012, Annexure P4, passed by the Engineer in Chief, Water Resources Department, whereby petitioner has been given benefit of, petitioner has been denied benefit of whereby benefit of the Finance Department Circular dated 24/1/2008 bearing number F11/1/2008/नियम/4 has been denied on the ground that department had specifically framed a the Finance Department issued another circular dated 18 July 2008, and therefore that there being a specific circular in regard to the sub-engineers of the department, works department, petitioner who had attained age of superannuation prior to 18 July 2008 is not entitled to the benefits of Finance Department Circular dated 24/1/2008. Next paragraph. Brief facts leading to the present case are that petitioner who was appointed as a sub-engineer attained age of superannuation on 30/6/2006 and retired from the post of sub-engineer, Sihora subdivision, Sihora. Next paragraph. Petitioner's contention is that Annexure P1, that is Finance Department Circular dated 24 January 2008, has been made effective from 1 April 2006.
and therefore petitioner is entitled to the benefit of time scale of pay in terms of the Finance Department circular dated 24 January 2008. Full stop. Respondent's next pair. Respondent's case is that since petitioner had attained age of superannuation prior to issuance of circular annexure P3 on 18 July 2008, therefore he is not entitled to the benefit of the Finance Department circular dated 24 January 2008. Next para. On perusal of annexure P3, it is evident that in reference there is a mention of Finance Department circular dated 24 January 2008. Full stop. Thereafter, it is mentioned that time scale of pay has been sanctioned by the Finance Department circular number F 11/1/2008 बटे नियम बटे 4 कॉमा dated 24/1/2008. Full stop. In para 2, it is mentioned that state government has taken a decision that in construction departments, sub-engineers be given benefit of Finance Department circular dated 24/1/2008 in terms of the table prescribed thereunder. Full stop. Thereafter, it is mentioned that the orders will be applicable from the date of issuance of this circular. Next para. This circular, it is evident that when the pay scales have been made applicable by Finance Department circular dated 24 January 2008 with effect from 1st April 2006, then without there being any justification for not extending the same to the sub-engineers, merely issuance of a separate notification without pointing out that they are a different category of civil servants who were not covered through annexure P1, comma, the distinction which is sought to be created by the respondents in pursuance of which annexure P4 is issued cannot be given a seal of approval. Full stop. Thus, the impugned order having been issued without application of mind and also there being no justification in annexure P3 mentioning that the order will be effective from the date of its issuance, despite the fact that all the decisions are in terms of the master circular dated 24/1/2008 which has been made effective from 1st April 2006, comma, this court is of the opinion that the impugned order being illegal and also annexure P3 to the extent that it prescribes a different date of its being effective, being illegal, are hereby set aside. Respondents are directed to extend benefit of time scale of pay to the petitioner with effect from 1st April 2006, the date on which he was in service, and to all other similarly situated employees. In above terms, petition is allowed and disposed of. None for the petitioner. Number 72. My lord, I am saying. 1 मई का कह रहे हैं। हाँ ठीक है, इसमें फाइनल हियरिंग 124 और 124.1 में श्री दिनेश चोपड़ा for the petitioner, Shri R.P. Khare for the respondent on joint request as petitioner has to bring a counsel from outside list on 1st May 2024. Top of the list, sir. अरे वो आ जाएगा, आपने आज भी मेंशन किया था, लिया ना हमने। खरे साहब भी आपत्ति नहीं करते हैं। ठीक है, थैंक यू। My lord, I am prayed for short adjournment. Item number 7. क्या हो गया इसमें? एडजॉर्नमेंट किस बात के लिए चाहिए आपको? Mr. S.K. Rao, senior advocate here, poses. हाँ? वो तो आए थे, सीनियर एडवोकेट का तो वैसे भी एडजॉर्नमेंट नहीं होता, उनका तो एंगेजमेंट होता है केस टू केस बेसिस पर। There is no provision for adjournment on account of। सुबह तो आए थे राव साहब, थोड़ा स्वास्थ्य की समस्या। क्या कहाँ भर्ती हुए बताइए? तो अस्पताल से डॉक्यूमेंट बुलवा लेते। नहीं, ये सब नहीं चलेगा, बहस करिए, शुरू करिए। The petitioner
He was working as assistant manager. ये लग्जरी बंद करें, ठीक है? कोर्ट 10:15 से 4:30 लगता है, हम भी बैठते हैं, आपको भी आना पड़ेगा। अगर आप अस्पताल में भर्ती हैं तो ऐसा बताइए, हम वहां से रिपोर्ट बुलवा लेते हैं, केस एडजॉर्न कर देंगे। हाँ दीजिए, कौन सी सिनॉप्सिस दे रहे हैं आप? ये बताइएगा। My lord, disciplinary proceedings, my lord, were initiated against the petitioner. Petitioner was working on which post? My lord, he was working as assistant manager, Shilpi Plaza branch, Riva. And he was working as assistant manager. My lord, जो list of dates है उसमें आपने बहुत ही एफाजार्ट बनाई है सबमिशंस आपके। नहीं सर, ये तो सबमिशन है सर। तो सबमिशंस ऐसे थोड़ा ना, सिनॉप्सिस होती है पहले। डेट ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ लिस्ट ऑफ डेट से चलिएगा। पिटिशनर ज्वाइंट शिल्पी प्लाजा ब्रांच एज असिस्टेंट मैनेजर। कंप्लेंट रिसीव्ड फ्रॉम द निर्मल ग्राम पंचायत अटारिया एंड अदर्स। FIR lodged with civil lines police station Riva against JK Ikka and the petitioner and Sandeep Kakodia, assistant manager under 409. Charge sheet served on the petitioner with a statement of allegations, list of documents, etc. जी, आप ग्राउंड्स बताइएगा। जी। Sir, I have been dismissed from service. Yes. And First of all, what were the charges? My lord, there are allegations. In fact, my lord, charges are only 4 in number. कहाँ है वो? The charge sheet, my lord, is at page annexure P3. P3, yes. Page 16. What has happened, my lord, is that the complaints were received. हाँ ठीक है, वो तो बैकग्राउंड पढ़ लिया, लिस्ट ऑफ क्रोनोलॉजी में सब समझ में आ गया। Customers के जो accounts है sir, they were arbitrarily debited. हाँ. And the kingpin of the मतलब irregularities, my lord, was the branch manager. And the allegation against me is that my ID was also being used. And some of the transactions were entered by the branch manager. In your ID? Yes, they were entered by the branch manager. I was the person who verified those entries. Okay. And in some cases, I was the person who entered the transaction. It was verified by the branch manager. तो ये बताइएगा कि आपकी आईडी क्या ब्रांच मैनेजर को नोन रहती है? नहीं, हमने नहीं बताया, ये हमारा कहना था। अच्छा। हाँ, और इसमें एक संदीप ककोड़िया भी है। He has been let off. He has been मतलब I made an application. This honorable court passed an order directing them to produce the record. So he has been imposed a punishment of stoppage of 2 increments with cumulative effect. ठीक है, इंक्वायरी बताइएगा तो पहले। जी। And my lord, he has been let off. Now, my lord, the defense that I took in reply to the show cause notice, my lord. And my lord, what has happened is they have. First of all, you are required to lead evidence in the departmental inquiry. My lord. What evidence was led in the departmental inquiry to show that you were innocent? My lord, evidence. I have not led any evidence, but you have not led any evidence. I have not led any evidence. Bank ने क्या evidence lead करी? Bank ने sir 2 witnesses की evidence lead करी है. एक branch manager है. Page number. सर ये annexure R11 है, page 69 की. हाँ, R11 देखते हैं. जी, R11 पेज 69 में एविडेंस चालू होती है। हाँ पढ़िए, आपने क्या क्या उनका चीफ में क्या कहा और आपने क्या क्रॉस किया? इसका जो सर 13/4/2012 की जो है डेट इज 18/4/2012 पेज 69 सर, इसमें सब्सिक्वेंट है। पेज नंबर बताइएगा।
This is actually on a different. Page 83, my lords. Page 83, yes. There are certain cash entries which they have said. What has happened is, my lord, that the son of the branch manager, certain amount has been transferred to his son in the bank account. Now, the allegation against me is that the pay orders were issued, were prepared by me, and in the evidence it has come that the pay order, just one pay order was issued in my handwriting. Rest of the pay orders were issued in the handwriting of the branch manager. And what they have said is that how I have benefited by this is there are certain cash entries which they have been able to locate. There was a transactional audit which was done. The ठीक है, तो जो एक भी अगर एंट्री पाई गई पे ऑर्डर इशू करने की, तो was it an authorized transaction? अगर वो authorized transaction था तो आपके पक्ष में जाएगी बात. Even if there is a single unauthorized transaction, it will go against you. So please show me from record that you have been able to cross-examine this manager MM Singh to point out that all the transactions were authorized transactions and they were undertaken by you in your capacity as assistant branch manager, and there is no illegality in said transaction. Sir, I have stated my defense was that. नहीं, पहले यहाँ क्रॉस बताएंगे, उसके बाद फिर डिफेंस आएगी. जी. जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का बेसिक सिद्धांत है वो ये है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने प्रेजेंटिंग ऑफिसर गवाहों को प्रस्तुत करेगा. गवाह जो है केस को प्रूव करेंगे प्रोसिक्यूशन के, आप उनको क्रॉस एग्जामिन करेंगे. जी. ये प्रक्रिया होती है. जी. तो थोड़ा बताइए तो क्या क्रॉस एग्जामिनेशन किया आपने? वैसे लॉ तो सेटल्ड है कि हाई कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सिट इन सेकंड अपील. I have stated that my defense has not been considered by the disciplinary authority. अरे वो तो बाद में आएगा, पहले तो मैं इसीलिए तो I have heard this argument. My lord. I want to understand that what is the foundation of your defense? Foundation of your defense will come from the cross-examination. My lord. If you cross-examine the witness, put him to a corner, My lord. and suggested that you were not at fault, then that defense can be taken in the brief. A defense without material will not be of any assistance to you. Either you will have to say that these witnesses were examined by you as the defense witnesses and their evidence has not been considered, or that the prosecution witness said this, I cross-examined him to this extent and this cross-examination has not been considered by the inquiry officer. My lords. इतना सा स्कोप है इसका. My lords. Sir, ये तो what has happened is they have admitted the fact. The cross-examination of the witness is seen. I stated that, my lord. हाँ. आप भी क्या सोच के आए थे आज केस नहीं होगा? नहीं सर, ये था एक्चुअली. प्रिजम्पशन यही है कि केस नहीं होगा, हम जब चाहेंगे तब बढ़ा लेंगे. Sir, in fact, वो synopsis I have handed over to submission synopsis. Submission, my lord. एक ही कॉपी है मेरे पास तो. दो कॉपी दे दीजिए. एक ही कॉपी है, दो नहीं है. सर जो MW1 है MM सिंह, from page number 21 to 24, his examination may be seen, my lord. हाँ, पढ़िए कौन सा इसका पेज बताइएगा. क्या पढ़ना है इसका? This is, my lord, the question that was put to him. Do you know that parents of Shri Girjesh Mishra? किस पेज पे पढ़ रहे हैं? सर ये पेज 21 है. पेज 21 से नहीं चलेगा यहाँ पर. यहाँ पेज 81, 82 आ रहा है.
चलिए 21 भी ढूंढते हैं आपके लिए। किस तारीख की प्रोसीडिंग है? This is on 18/4/2012, my lord. In terms of proceedings dated 18/4/2012। 13/4/2012 की today's proceeding commences below 18/4/2012. एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। हाँ पढ़िएगा। यस, ये ट्रांजैक्शनल ऑडिट सर ये MW2 का है और इसमें आई एम RS छाबड़ा वर्किंग एज मैनेजर इन जोनल ऑडिट ऑफिस। और इसमें जो सर नेक्स्ट पेज है, एज पर डॉक्यूमेंट नंबर MEX 77318 ट्रांजैक्शनल जो ऑडिट रिपोर्ट करी है इन्होंने, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द प्रोसीजरल लैप्सेस हैव बीन रिपोर्टेड ओनली अगेंस्ट द ब्रांच मैनेजर। इज इट करेक्ट? दे से यस इट इज बिकॉज़ इट वाज आवर ऑब्जर्वेशन। पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। माय लॉर्ड्स, MW2 का पढ़ रहे हैं ना? माय लॉर्ड्स, हाँ पढ़िएगा। MEX 73/1 to 73/83 is a transaction audit of Union Bank of India, Shilpi Plaza branch, Rewa, dated as per instructions of Zonal Audit Office Bhopal, it contains various observations mentioned therein in gist. These are: branch has paid 18 pay orders amounting to so and so fraudulently as per summary of fraudulent of pay orders and annexure 1 enclosed. Unauthorized debit transactions were made in various accounts as per annexure 2. Various irregularities have been observed in transactions detailed in annexure 3 and 4 along with photocopies of the instruments transaction wise. A fraudulent act involving rupees 14,500 was observed in cash department detailed in annexure 5 along with relevant photocopies. The then branch manager adopted of practice of preparing and handing over the pay orders to the parties without making book entries and control them at a later date. Due to this practice, many pay order leaves remained unprinted in Finical system. Such unused stationery list has been given in Annexure 6 along with our observations. The above practice resulted in mismatch of actual PO number stationery used and printed PO number. During voucher checking, we have observed and listed the such PO numbers in Annexure 7. Total loss works out to 26 lakh something to various customers as per computation of what amount involved in fraud sheet enclosed. MX 73-2 is a computation amount involved in the fraud. So report has been so and so compiled. Are the transaction contained and reported in so and so as per the banking procedure prevailing Union Bank of India? Since the transactions reported in so and so were not carried out as per the banking procedure of Union Bank of India and there were procedural lapses, hence these were reported in so and so along with enclosures as a transaction audit report of Union Bank of India dated so and so, which I confirm. With this examination, Chief of MW2 is over and I have no more questions to ask to. If you wish, you may cross-examine. As per document number MEX 73, it is observed the procedural lapses have been reported only against the branch manager. Is it correct? Yes, it was because it was our observation. ठीक है। फिर सर नीचे सिर्फ MEX आपका सवाल था as per document MEX 73/1 is observed that the procedure please yes फिर जो रिपोर्ट इनकी है सर, and if my lords will come down further during the course of जो नीचे से तीसरी है, during the course of a transaction audit have you heard anything adverse about the integrity and honesty of Shri Gijesh के mission? सर नीचे से तीसरी जो पैराग्राफ है, ठीक है। MW2 ने कुछ नहीं कहा, फिर कुछ नहीं कहा सर। अब ये जो अगला विटनेस MW1 जो है वो ब्रांच मैनेजर है सिंह साहब जी। उसका पेज नंबर MW1 का भी देखना सर। ये जो प्रोसीडिंग है दिस इज ऑफ 19/4/2012 in terms of proceeding dated 18/4/2012. today's proceeding commenced. एक सेकंड MW1 का क्रॉस एग्जामिनेशन बाद में हुआ है क्या?
सर कुछ पार्ट पहले हो गया था, कुछ फिर बाद में कंटिन्यू हुआ है। वहाँ पे क्या हुआ 19 तारीख को क्या हुआ देखें जरा। Notes में kindly come to this is at page 89 minutes. पेज 89 यस पढ़िएगा। In the middle of this table, my lord, do you know that parents of Shri Girjesh Mishra are residing at Bhopal and in-laws stay at Rewa? क्या मतलब है? सर इसमें कुछ इन्होंने एंट्रीज पेश करी है, हमारे अकाउंट में कुछ पैसा गया है। That is even prior to the time that I joined at Plaza branch Rewa. उस समय की भी एंट्रीज हैं. So for that, my lord, I have put a question to him that my parents, my lord, they were residing at Bhopal and in-laws were residing at Rewa. So the expenses that they have given me, I have deposited in my own account. So that cannot be taken into consideration for, my lord, inferring that I have misappropriated any amount. The amount that has gone is gone into the bank account of the son of the branch manager, Rahul Ekka. तो इसमें ये पूछा है सर, तो ये उन्होंने कहा है. Then, my lord, the irregularities that they're pointing out, again I've asked them a question: who is responsible for maintenance of record vouchers at the branch as per bank's laid down procedure? As per bank's norms, branch manager, accountant and daftari are responsible for maintenance of records and voucher. Because it was their allegation that whatever the transactions were being conducted, there is no voucher. So the, my lord, responsibility of maintaining the vouchers was with the branch manager and the accountant. I have not misplaced those vouchers, my lord. This is what the answer that they have given us. Then, my lord, on the next page, the my lord, third line from the top, my lord. 90 में, page 90 पे. My lord. The third, my lord, MEX 29 is a letter given by Mr. Bhaiyalal Daftari, Shilpi Plaza branch Rewa at the time of visit of senior manager in connection with maintenance keeping of vouchers at Shilpi Plaza branch Rewa, stating that while stitching the vouchers, he writes the numbers of the bundles and envelope, but does not tally it from anywhere. Cash vouchers are put in the envelope after counting, but they're not tallied from anywhere. Voucher register is not maintained and certain vouchers mentioned in so-and-so are not available. MEX 29 bears the signature of Shri Bhaiyalal, whose signatures are recognized and confirmed. In the above circumstances of the branch, is it possible that the transactions made by Shri Girjesh Mishra may be based on vouchers signed by J.K. Ikka and the vouchers might have been misplaced afterwards? Although vouchers pertaining to many transactions are not traceable, but this possibility is there. This is his reply, my lord. Now, my lord, next, can you tell the date of joining of Shri Girjesh Mishra? Date of joining the bank of Shri Girjesh Mishra as seen by me in Union Parivar is 17/7/2007 and date of joining at Shilpi Plaza branch Rewa is 2/2/2009. जो इन्होंने कैश एंट्रीज भी कही हैं, कैश एंट्रीज शिल्पी प्लाजा ब्रांच रीवा में ज्वाइन करने के पहले एंट्रीज हैं. जी जी जी. So those entries cannot be taken into account, my lord, and those entries in fact. वाली एंट्री का पढ़िएगा जरा, बीच में आइएगा. MW1 जो रिप्लाई दे रहे हैं. After that, you have informed. The pay orders are available and lower portion of MEX 36. My lord, yes, that is what I said at the starting, my lord. That there is only one, my lord, so pay order. Even if there is a one pay order, what is the authorization for issuance of that pay order? मैंने आपसे तभी तो कहा था. My lord, that is, I have said, for authorization. Prepared in the handwriting of Shri Girjesh Mishra and also signed by Shri Girjesh Mishra. This I have stated in my defense, my lord, but it was on the instructions of the branch manager. ठीक है, नहीं. सिर्फ एक वो किया है, बाकी में किसी में हमारा नहीं है. And this is my defense in the, my lord, reply to the show cause notice. They have not considered that. They have passed the finding on the ground that all the pay orders have been written by me. That is not the case. Now, my lord, may kindly see as regards the entries which have been made in the Finacle system, that is the computer system. My lord will see, my lord, the third line, the third paragraph from the bottom, my lord. What is the minimum time required for entering and verifying a transaction in different computer systems? Although it is a subjective matter depending upon the pressure of work and volume of the work, but in my opinion, in an ideal situation, it should take approximately 2 to 3 minutes. Yes. And my lord, below this, my lord, the transactions, if my lord will see the next page. Yes.
The second para, my lord. Please peruse defense, my lord. This was the only document that I filed, 1 to 10. Since the time taken in these transactions is less than a minute, and such whether it denotes that the transaction might have been carried out on a single computer system, is it possible and also advised as per the contents of defense exhibits and leaked period of Shri Girjesh Mishra? It is possible. As per defense exhibit so and so, Shri Girjesh Mishra was on leave from all these periods, my lord. So what I have tried to demonstrate, my lord, is that even during my leave period, my ID was being utilized by the branch manager. So how can your ID be utilized by somebody else? It was hacked by the... नहीं, ऐसा आपने कहा क्या? आपने इसका suggestion कहाँ दिया that your ID was hacked? You were sharing your ID with the branch manager and both were working. How can somebody, if somebody is on leave, his ID be used? तो समझाइए, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है. सर इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया कि साहब हमने तो इन्फॉर्म नहीं किया, हमने उनको नहीं बताया था. अब ये आईडी इन्होंने जैसे भी हैक कर ली तो आपको तो जब मालूम, आप लौट के आएंगे छुट्टी से तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि आपकी आईडी से कोई ट्रांजैक्शन हुए हैं. आपकी आईडी के ट्रांजैक्शन तो आपको मालूम पड़ेंगे. अगर मैं अपनी ईमेल आईडी किसी से शेयर नहीं करता, बहुत ही कॉमन सी बात है, ठीक है, उसका पासवर्ड शेयर नहीं करता मैं, कोई उसको हैक कर लेता है, तो जब मैं उसको खोलूंगा तो मुझे ये तो मालूम पड़ेगा ना कि मैं तो 4 दिन से छुट्टी पर था, इसमें तो मैंने अपनी ऑफिशियल ईमेल यूज ही नहीं करी, लेकिन ये इतने ट्रांजैक्शन पड़े हुए हैं इसके अंदर, तो मैं तुरंत उसकी सूचना दूंगा अपने सुपीरियर्स को या सर्विस प्रोवाइडर को या जिसने मुझे आईडी बनाकर दी है कि भाई मैं तो 4 दिन छुट्टी पर था, 4 दिन शादी में गया था, मेरे को कोई ओकेजन ही नहीं था आईडी ऑपरेट करने के लिए, एंड येट देयर आर ट्रांजैक्शंस. क्योंकि आपकी सहभागिता के विरुद्ध, और फिर आपने कब एफआईआर दर्ज कराई छुट्टी से लौटने के बाद कि आपकी आईडी हैक हो गई? FIR was lodged at my instance, my lord. No FIR was lodged at your instance. You should have reported this matter to police that your ID has been hacked and it has been misused by somebody. My lord, the explanation is there on the next page, my lord. Next page पढ़ें. ये जो 92, my lord. Middle of the page, my lord, CSO. I was a junior officer having joining of July 2007 and worked with Shri J. Kecha, the then branch manager of Shilpi Plaza branch, Riva, since 2009. And I have always performed my duties under the guidance of branch manager and obeyed his order. So and so in the case of issuance of the referred pay orders, about which I was told that the money has been received at the branch. And only in one case, MEX 36 lower portion for rupees 3,000 has been prepared and signed by me. I was asked by the branch manager to put verification ID for the loan accounts open admitted in Fenical system as a dual control procedure of the bank, which I had to obey, and I did so as per branch manager's instructions. I also wish to submit that even during my leave period absence from the branch, my ID is shown to have been used as Fenical as deposed by MW1, but I confirm that I did not disclose my ID to anyone in the branch. ठीक है. And my lord, the ट्रेनिंग में ये नहीं बताया गया था कि आपने खुद कहा ना, was asked by the branch manager to put verification ID for the loan accounts opened and admitted in Fenical system. जी, उसके लिए कहा गया था, और एक सिर्फ इसमें 3,000 का जो ये बनाया पे ऑर्डर उसमें था. उसमें आपने खुद स्वीकार किया कि आपने खुद बनाया था. हाँ, 3,000 का लोअर ब्रांच मैनेजर ने बोल दिया पैसा आ गया है. भाई जी, जो बना रहा है वो तो अकाउंटेंट पैसा गिनेगा ना पहले जी, ये अकाउंट डेबिट करेगा. अगर मेरे अकाउंट से एक पे ऑर्डर बनना है तो फर्स्ट माय अकाउंट विल बी डेबिटेड. इट विल बी सीन दैट वेदर 3,000 rupees exist in my account or not. My lord. If the balance is 100 rupees, then how can I get a pay order issued for 3,000 rupees? My lord. Now, okay, so then if I have to work like this, my lord, then what I'll do? I'll first see that there is a money in my account if my account is to be debited. My lord. Then I'll debit the account. Put an entry there that the account is debited for preparation of pay order number in favor of such and such. That is the piece. ठीक है, ये तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है. आपने कॉमर्स किया है कि साइंस किया है? सर मैंने तो साइंस किया है, विनोद ने तो कॉमर्स किया है. मैंने तो साइंस ही पढ़ा है, बट आई हैव अंडरस्टूड द प्रोसीजर. मैंने भी साइंस ही पढ़ा था, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ सीख के कॉमर्स सीख रहा हूँ मैं. डेबिट क्रेडिट एंट्रीज कैसे बनाई जाती है, कैश बुक कैसे भरी जाती है, लेजर कैसे मेंटेन किया जाता है. ठीक है, यही होता है ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यही है. Lord, as per the computer system, whenever an instruction is received for making a pay order, the amount is debited from the customer's खड़े रहते हैं घंटों लाइन में बैंक में, कोई हमें वीआईपी ट्रीटमेंट थोड़ा ना मिलता है. पहले खाता खोलता है, फिर देखता है कि उसमें पैसा है कि नहीं, फिर वो पैसे का एक वाउचर पे साइन कराता है, उस वाउचर से फिर दैट इज अ डेबिट इंस्ट्रक्शन टू द बैंक
debit my account, then my account is debited, then a pay order or DD is prepared, as the case may be. यही होता है? क्या आपके साथ कुछ और होता है? And there is a account, separate account for it. The amount is debited and it goes into that account. And then when the pay order is presented, it is debited from that account. Yes. So that is what the complaint is. The customers made a complaint that we have never issued any instruction. How come this amount was? You are required to show the instructions. अब ये जो 3,000 रुपए का बनाया, इसका इंस्ट्रक्शन कहाँ है आपके पास में? आपका इतना सा ही डिफेंस होना चाहिए था कि साहब मैंने तो गुलाटी साहब के कहने पे बनाया और ये गुलाटी साहब का वाउचर है, जिसपे वाउचर इज द इंस्ट्रक्शन. सर वाउचर हैव नॉट बीन ट्रेस्ड. दैट इज द प्रॉब्लम. इंस्ट्रक्शन और क्या होता है? वाउचर ही तो होता है. My lord, there has been some amount of negligence, or I would say, my lord, but that would not lead to the conclusion, my lord. अभी तो साहब कहीं और नौकरी कर रहे होंगे ना? नहीं सर, अभी तो कोई नौकरी नहीं कर रहा है. He's unemployed, my lord. And my lord, the charge of corruption has been levied against me. क्या है ये क्या है? I have not benefited from the amount. You may not have been benefited, but you have fraud on the customer who has entrusted his property to you. 409 का चार्ज ऐसे थोड़ा ना बना है. आपको क्या इंटरेस्टमेंट है? मैं अपना बैंक में खाता में पैसा जमा कराता हूँ, इट इज इंटरेस्टमेंट. आप उसको बिगर अथॉरिटी अगर कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो इट इज ब्रीच ऑफ दैट इंटरेस्टमेंट. कल को आप दीक्षित साहब के अकाउंट से पैसा निकाल के दिखाइए बिगर उनकी आज्ञा के. कुछ नहीं है. Lord, I am also claiming parity with. Parity कैसे हो जाएगी? उसका केस बताइए ना, काकोड़िया का. सर वो रिकॉर्ड इन्होंने दिया नहीं, हमने RTI लगाई थी. तो this honorable court passed an order. नहीं सर, this honorable court passed an order for them, मतलब directing them to produce a record. ठीक है. और दो कोई ये तो चीज रिकॉर्ड जो है, इंक्वायरी आपकी काकोड़िया की अलग हुई है क्या? हाँ, काकोड़िया के ऊपर चार्ज किया था. चलिए बताइए. सर चार्ज नहीं, वो सब नहीं था, वही मांगा था हमने इनसे. इसमें तो जो पूरी और इसमें जो एंट्रीज का जो सर आ रहा है एलिगेशन. काकोड़िया किस पद पर था? काकोड़िया भी असिस्टेंट मैनेजर ही था सर. हाँ. एंड ऑर्डर वाज पास्ड ऑन 8/9/2023 my lord. कहाँ है रिकॉर्ड? ऐसे सुनने खड़े होने से काम नहीं चलेगा. ये कोर्ट वो नहीं है. ठीक है. वेयर इज द रिकॉर्ड? पेज नंबर 53 ऑफ 53 किसका देखना है? अभी तक क्या पुराने जमाने के वकीलों को पुरानी आदत पड़ी है कि 1:30 बजे कोर्ट की छुट्टी, टिफिन लेके घर निकल गए. अब तो हम लोग तो पूरे टाइम वी आर अंडर द गेज ऑफ कैमरा. वी हैव टू सिट हियर, वी हैव टू फंक्शन, वी हैव टू वर्क. लॉयर्स के लिए नहीं है ऐसा कुछ भी बाध्यता. पहले होता था ना, जब शुरू में 1:30 बजे हाई कोर्ट की छुट्टी. हमने भी आप ही के साथ देखी है सर. आपसे जूनियर है तो क्या हुआ? सिर्फ मोशन हियरिंग के मैटर्स हुए, उसके बाद कहानी खत्म. 30 से 40 केस लगते थे हाई कोर्ट में. हाँ, उसी का तो खामियाजा है. 4.5 लाख केस पेंडिंग है कोर्ट में आज. हाँ बताइए कहाँ है? कौन सा पेज देखना है? अच्छा चलिए, आपकी पहले इनको बाद में. आपकी अपील मेमो दिखाइए. अपील मेमो में क्या है? वेयर इज योर मेमो ऑफ अपील? नोटिस नेक्चर P7 at page 178. हाँ पढ़िएगा, मेमो ऑफ अपील पढ़िएगा. Para 4, my lord, is the Para 4 page number? Page number is 181, my lords. 181, yes. क्या कहा उसमें? At the outset, it is respectfully submitted here that the first date of hearing in the inquiry proceedings, which took place on 7/9, undersigned has denied the allegation of charges shown against him.
it is respectfully submitted here that undersigned has accepted some lapses during the work mentioned against the aforesaid allegations. Undersigned has categorically submitted before the learned inquiry officer and the learned disciplinary authority that the aforesaid negligence and lapses took place due to faith of superior officers, manager of the said branch. At this juncture, it is respectfully submitted here that undersigned has rendered near about 3 years of unblemished service with the bank. Undersigned entire service career is clean and unblemished, except for the present proceedings. Thereafter, my lord, in para 11, taken a detail, my lord. नहीं, काकोड़िया जी वाला ग्राउंड कहाँ है? जो आप भाई जो ग्राउंड आप अपील में उठाएंगे पैरिटी का, वही तो यहाँ उठाएंगे. काकोड़िया साहब वाला ग्राउंड कहाँ है? नहीं, काकोड़िया का तो सर उस समय हमको जानकारी थी नहीं, क्योंकि उनको तो सेपरेट इंक्वायरी हुई. अरे भाई, कब हुआ काकोड़िया साहब को पनिशमेंट कब हुई? वो सर, अरे आप पैरिटी क्लेम कर रहे हैं ना जी, आपको कुछ तो आइडिया होगा, हवा में थोड़ा ना हो. सर हमने एप्लीकेशन लगाई, एफिडेविट पे दिया है कि ही इज वर्किंग इन द बैंक. He may be working in the bank. When was he inflicted with the penalty of a stoppage of 2 increments? Sir, that order we don't have. We had made an application under the Right to Information Act. This is along with my IA. कब किया था आपने वो एप्लीकेशन? 23/9/2021. मतलब IA is 1685. 1685. चलिए, फिर क्या हुआ उसका? 23/9/21 को सर हमको ये जानकारी मिली है कि रिप्लाई मिला है that the information will not be granted to us. फिर इसकी अपील का क्या हुआ? इसकी फर्स्ट अपील सेकंड अपील होती है ना? Malords. क्या हुआ उसका? My lord, then thereafter we have made this application before this honorable court and on 8/9. वो तो 14 से पड़ी हुई है एप्लीकेशन यहाँ पर. नहीं सर, ये 23 में हमने लगाई एप्लीकेशन जिसपे कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है. हमको बोला था. High Court is not an appellate authority under the RTI Act. My lord. किस तारीख का ऑर्डर है आपका? 23? सर 8/9/2023 का ऑर्डर. 8/9/23 का ऑर्डर है. कैसे हो सकता है बताइएगा, जब अपीलेट अथॉरिटी ने, और वो तो आपकी इंक्वायरी के लिए कहा है. नहीं, इन पे है ना को डिलिक्वेंट संदीप काकोड़िया के लिए बोला है ना. नहीं, बट कैसे, अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ वी कैन डायरेक्ट समबडी टू प्रोड्यूस द रिकॉर्ड्स? आरटीआई में जब आपके पास फर्स्ट अपील सेकंड अपील का स्टैट्यूटरी प्रोविजन है. That has been denied to. If it is denied to you by the public information officer, then only the first appeal and second appeal arises. My lord. You have not availed that remedy. My lord, but because the matter was pending before this honorable court. Had by that time I would not have. When the matter was pending, then why you moved an application under RTI? देखिएगा, this writ petition is filed being aggrieved of order dated 10/1/2014, passed by the respondent number 2, General Manager P&HR, dismissing the appeal of the petitioner. Wide Annexure P1 on 10 January 2014 against the orders of the disciplinary authority dated 14/6/2013, whereby petitioner was visited with major penalty of dismissal from service of the bank with immediate effect. Full stop. Next para. Petitioner's case is that petitioner was posted as assistant manager in the Shilpi Plaza branch of Union Bank of India, Riva. Full stop. Next para. A charge sheet was issued to the petitioner on certain charges on 21/12/2010, and thereafter a supplementary charge sheet was issued on 24/3/2011, respectively as Annexure P3 and P4. Full stop. Petitioner had furnished a reply to the said charge sheet, and thereafter a regular departmental inquiry was conducted, and after conduct of said departmental inquiry, petitioner had submitted his brief in reply to the show cause notice as contained in Annexure R15, and that reply was not considered by the disciplinary authority while passing impugned order dated 14/6/2013, Annexure R16. Full stop. It is also submitted that defense made in para 4 and 11 of the appeal memo, Annexure R17, was not considered by the appellate authority while passing the impugned order dated 10/1/2014, Annexure R18. Full stop.
it is submitted that admissions of the management witnesses pertaining to the innocence of the petitioner were neither considered by the disciplinary authority nor the appellate authority. In this regard, deposition of MW1, MM Singh, branch manager Shilpi Plaza branch Rewa, and Shri R.S. Chavda, manager Union Bank of India, Zonal Audit Office Bhopal, have not been considered by the authorities. Next paragraph. It is also submitted that the punishment of dismissal from service is shockingly disproportionate as charge of corruption is not proved to the hilt and mere negligence without any ulterior motive cannot invite such a harsh punishment. Next paragraph. Reliance is placed on the judgments of दीजिएगा किताबें लाएं क्या वो दीजिए तो आपने 23 MPLJ लिखा है आपके इसमें नोट में 2003 का 8 SCC 79 का इतना Reliance is placed on the judgment of Supreme Court in Union of India and others versus J. Ahmed 1979 2 SCC 286, Dev Singh versus Punjab Tourism Development Corporation Limited and another 2003 का 8 SCC 9 and that of Madhya Pradesh High Court in कहाँ है ये 2023 का MPLJ 603 सर ये पहला जो जजमेंट दिया दिस इज जय कुमार 2022 का है and also in case of Jay Kumar Bajpai it is of 22 minutes versus Chairman MP SEB 2022 का 3 MPLJ 603 full stop. Reliance is also placed on the judgments of other Supreme Court decisions on the ground and Madhya Pradesh High Court decisions on the ground that petitioner has been denied parity with co-delinquent Shri Sandeep Kakodia, who was also working as assistant manager and who has been inflicted with penalty of stoppage of 2 increments only. Next para. It is submitted that record of the departmental inquiry of Shri Sandeep Kakodia has not been produced by the respondents despite orders of a coordinate bench dated 8/9/2023. Next para. Shri, आपका शुभ नाम बताइए. सुखेंद्र कुशवाहा. सुखेंद्र कुशवाहा. हाँ, आपको कुछ कहना है? हाँ, क्या कहना है ये? Synopsis. Has produced a written synopsis on behalf of the respondent bank and places reliance on the judgment of Supreme Court in Indian Oil Corporation and others versus Ajit Kumar Singh and another decided in civil appeal number 3663 of 2023 on May 17, 2023. So also on the decision of learned single judge of this honorable single judge of this High Court in Mukesh Kumar Jha versus Union Bank of India in WP 17411/2014 decided on 15/5/2020. Full stop. Reliance is also placed on the decision of Supreme Court in State of Uttar Pradesh and others versus Rajit Singh AIR 2022 SC 1551 and judgment of division bench of this High Court in writ appeal number 1870/2018 decided on 21/1/2020 State Bank of India and others versus Satyendra Arya. Full stop. ऊपर एक गलती हो गई जो इन्होंने काकोड़िया वाला लिखा था ना उसमें 3 जजमेंट और लिख लीजिएगा इनके पिटिशनर के. राजेंद्र यादव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स 2013 का 3 SCC 73
नरेश चंद्र भारद्वाज वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2019 का 15 SCC 786 एंड डिवीजन बेंच जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट इंदौर बेंच इन रिट अपील 247/2018 and 240/2018 Hindustan Petroleum Corporation Limited and another versus Kailash Chandra. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that firstly, petitioner has not been able to raise any ground of parity either before the disciplinary authority or the appellate authority, a fact which is admitted by SHRI Abhishek Gulati. Next para. Another fact is that though petitioner had applied for certain information under Right to Information Act, as is evident from the application which was filed by him as Annexure IA1 along with IA 1685/23, seeking information from the bank under RTI Act in 2021, and after dismissal of that application on 23/9/2021, admittedly petitioner had not filed any first appeal or second appeal. Full stop. He was provided copy of the charge sheet dated 21/12/2010 and the decision dated 14/6/2013. Full stop. It was informed that the information sought against co-employees Sandeep Kakodia and JK Ikka is their personal information and that information cannot be disclosed in terms of the provisions contained in section 8(1). ड क्या होगा देख लीजिएगा, एफ है क्या है ये, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दीजिएगा, जे होगा शायद, ये जे होना चाहिए. (8(1)J) of the RTI Act, full stop. Admittedly, no first appeal or second appeal was filed by the petitioner if he was aggrieved of non-disclosure of information in relation to Shri Sandeep Kakodia or JK Ikka, full stop. Therefore, now, bypassing the statutory provisions of the RTI Act, this court cannot direct the authorities to disclose personal information, full stop, that would amount to bypassing the statutory provisions of the Right to Information Act 2005. Next paragraph. As far as merits of the case are concerned, it is evident from the inquiry report. कहाँ पढ़ रहे थे अपन inquiry report? P7 नहीं, किसके साथ फाइल की थी आपने? इंक्वायरी रिपोर्ट वो जो अपन एविडेंस पढ़ रहे थे पेज 81 82. सर वो तो मैनेजमेंट विटनेसेस का एविडेंस. हाँ, वो कहाँ किसके साथ फाइल है वो? एनेक्चर सर ये पेज 69 से चालू है. पिटीशन के साथ ही है, रिप्लाई के साथ है सर. R11 evidence of witnesses, prosecution witnesses as contained in annexure R11 is when examined, then two things appear. Firstly, petitioner had not examined any defense witness. Secondly, though at certain point of time in relation to certain documents he was given clean sheet, but there is an admission on the part of the petitioner of preparing a pay order of rupees 3,000 out of the 18 alleged pay orders. 18 ही थे ना? Correct. And which has been termed to be a mistake
on account of the instructions of the branch manager, full stop. Thus, after admitting the fact that within inverted commas, I was asked by the branch manager to put verification ID for the loan accounts opened and admitted in FINACLE, FINACLE system as a dual control procedure of the bank, which I had to obey, and I did so as per the BM's instructions, full stop. I also wish to submit that even during my leave period, absence from the bank, from the branch, comma, my ID is shown to have been used in FINACLE as deposed by MW1, but I confirm that I did not disclose my ID to anyone in the branch, full stop. Keeping these circumstances in view, I request to the DA through these inquiry proceedings to view the matter in this backdrop of the facts and exonerate me from the alleged allegations and charges for which I pray, full stop, inverted commas, close. Thus, next paragraph. Thus, it is evident there is an admission of preparation of one pay order by document MEX-36/7 for a sum of rupees 3,000 and being signed by the petitioner, full stop. The allegation on the petitioner, as is evident from the charge sheet annexure P3 and P4, are to the following effect. ये P3 P4 का imputation of charge copy कर दीजिएगा. Thus, it is evident that petitioner, who was a trustee of the property of its customers, had committed a criminal breach of trust by preparing pay order, even if one, as admitted by the petitioner, dehors the instructions of the client, that is the account holder, and therefore, when examined, then in the light of the financial transactions and the sanctity of those financial transactions, it cannot be said that petitioner was totally innocent. Next paragraph. As far as reliance on the judgment of Supreme Court in Union of India and others versus J. Ahmed is concerned, comma, the ratio of the law is that deficiencies in personal character or personal ability do not constitute misconduct for taking disciplinary proceedings. Full stop. The reference therein is to the All India Services within bracket conduct bracket close rules 1954 and the discipline and appeal rules 1955, etc. In the present case, comma, petitioner has not been able to point out that misuse of the property by preparing a pay order, even a single pay order without authorization, will not be a misconduct, and therefore the ratio of the judgment in case of J. Ahmed has no application to the facts and circumstances of the case. Next paragraph. Similarly, judgment in case of Dev Singh deals with aspect of ulterior motive, and it says that misplacement of an office file in absence of any ulterior motive, then punishment of dismissal therefore would shock judicial conscience, and instead punishment of withholding of one increment including stoppage of efficiency bar would be proper. Full stop. Again, this judgment is having no application to the facts of the case, in as much as criminal breach of trust is different from misplacement of an office file without there being any ulterior motive. Full stop. Here, mens rea is ingrained once
it is admitted that on the instructions of the superior officers or for even otherwise, a bank pay order was issued without there being a proper authorization. Full stop. Thus, prima facie, the judgment of Supreme Court in Dev Singh will have no application to the facts and circumstances of the present case. Next pair. Similarly, judgment in case of Jay Kumar Bajpai, wherein it is held that since petitioner therein, that is Jay Kumar Bajpai, was not given any training of accepting online electric bill, therefore, charge of financial embezzlement with customer account was not held to be proved. Full stop. It is held that merely because opportunity has been granted to the petitioner to contest in departmental inquiry, but not considering his defense would amount to violation of principles of natural justice. Full stop. But this judgment too has no application to the facts of the case, in as much as petitioner admittedly did not produce any defense evidence before the inquiry officer. Next para. As far as judgment in case of Rajendra Yadav in regard to parity with co-delinquents is concerned, comma, neither the charge sheet as was issued to Shri Kakodia has been produced before this court, nor the evidence which could have been weighed by the court to point out that as to whether the charges are similar in nature or the gravity of the charge is similar and that petitioner has been discriminated in that regard. Full stop. In fact, as mentioned above, petitioner did not take any ground of discrimination vis-a-vis Shri Kakodia either before the disciplinary authority or before the appellate authority. Full stop. As far as Shri Ekka is concerned, who was the branch manager, he too has been dismissed from service. And therefore, acts of the petitioner being para passu with that of his branch manager Shri Ekka, comma, the prima facie, the parity is evident from the record. Next para. As far as judgment of Supreme Court in Naresh Chandra Bhardwaj versus Bank of India is concerned, comma, wherein it is held that though the scope of interference with quantum of punishment by court is very limited, but where plea is raised of parity in punishment, court may interfere. Full stop. However, the Supreme Court has held that in such case, prerequisite would be that parity has to be in nature of charges made and established against delinquent employee and conduct of employee post incident. Full stop. In the present case, neither the charge sheet has been brought on record as was issued to Shri Kakodia, nor the inquiry report to point out that petitioner is entitled to the benefit of parity. Full stop. Similarly, in case of Hindustan Petroleum Corporation Limited and another Supra, comma, it is held by the Honorable Division Bench of the High Court that when charges leveled and proved against present respondents and other within bracket ministerial employees bracket close and other officers are arising out of same transactions and are similar in nature, then officer who is held to be transaction originator was dealt with leniency, whereas respondents were inflicted with severe punishment of dismissal from service. Full stop. But in the present case, facts are different. Originator of the transaction being Shri Ekka, the then branch manager, has been given penalty of dismissal from service, and same penalty has been given to the petitioner for being a co-conspirator and admittedly preparator of at least one pay order of ₹3,000 as has been admitted by him before the inquiry officer. Therefore, this judgment too has no application to the facts and circumstances of the case. Next para.
as far as doctrine of equality is concerned, law in this behalf is as laid down in case of Rajit Singh Supra, wherein it is held that doctrine of equality cannot be applied when inquiry officer and disciplinary authority held charges to be proved against delinquent, full stop. Role of each individual officer, even with respect to the same misconduct, must be considered in light of their duties of office, full stop. And therefore, it is held that the tribunal as well as High Court erred in quashing order of punishment imposed by the disciplinary authority. Next para. Similarly, in case of Indian Oil Corporation versus Ajit Kumar Singh, as decided in Civil Appeal number 3663 of 2023, while discussing the scope of the inquiry, Honorable Supreme Court has held that there cannot be a reappreciation of the entire evidence as if conviction in a criminal trial was being re-examined by the next higher court. Full stop. It is observed that within inverted commas, the stand taken by respondent number 1 was that he was on leave and there was no question of his tampering with any document, full stop. His contention was that merely because he had the duplicate key of the drawer where the documents were kept, comma, he cannot be made responsible for any tampering, full stop. However, comma, there was no answer to the finding recorded by the inquiry officer in the inquiry report, comma, namely, comma, that the changed form of quotation of Messrs. Lakshmi Singh contained original signature of respondent number 1, full stop. The fact that this, within inverted commas, form of quotation, inverted commas closed, was changed is not in dispute, full stop. When the changed form of quotation also contained signature of respondent number 1, comma, it clearly established his involvement in the tampering of the document, full stop, inverted commas close. This fact is identical to the case of the facts of the present case, in as much as petitioner himself admitted preparing at least one pay order of rupees 3,000, full stop. It contains his signatures, full stop. Thus, preparation of a pay order debiting somebody's account without there being instructions from the account holder, comma, will, as has been established by the inquiry officer and considered by the disciplinary authority, comma, is a sufficient material to establish involvement of the petitioner as held by the Supreme Court in case of Ajit Kumar Singh and another Supra, full stop. Similarly, in
Coordinate bench in case of Mukesh Kumar Jha has observed as under. ये पैरा 14 कोट का दीजिएगा, मैंने निशान लगा दिया पेज 14 से पूरा का पूरा, ठीक है ना. When this aspect is taken into consideration, then there being no violation of the principles of natural justice and the judicial review is not an appeal from a decision, but a review of the manner in which the decision is made, comma, there is no iota of doubt that there being no procedural irregularity, it does not call for any interference. Next para. Thus, the full stop. Similarly, in case of State Bank of India and others versus Satyendra Arya, Honorable Division Bench of this High Court क्या लिखा Satyendra Arya, comma, referring to the decision of the Honorable Supreme Court in Union of India and others versus P. Gunasekaran 2015 का 2 SCC 610. It is held that the High Court in exercise of its powers under Articles 226 and 227 cannot venture into the reappreciation of evidence or interfere with the conclusions in any inquiry proceedings, comma, if the same are conducted in accordance with law. Full stop. Therefore, taking these facts into consideration and the directions of the Supreme Court that High Court should not venture into the reappreciation of evidence and that it can only see whether, ये मैंने पेज 17 पर है, निशान लगा दिया, कर दीजिएगा इतना इतना, ठीक है ना. ये पहले भी आप कॉपी कर चुके हैं, मिल जाएगा आपको इतना इतना. Then it is evident that there is a failure on the part of the petitioner to maintain the sanctity of the banking transaction, and there being a prima facie evidence of criminal breach of trust in fidgeting with the accounts of the account holder without their authorization, comma, impugned order of penalty and the appellate order dismissing the appeal cannot be faulted with. Petition fails and is dismissed. Parties to bear their own cost. Next case. हाँ, रिक्वेस्ट है फाइलिंग की कितनी रिक्वेस्ट है? हाँ, दीजिए. रिक्वेस्ट है सीरियल नंबर 140 137 क्यों छोड़ दिया? अच्छा, 140 बताइएगा. बताइए. सर, इनसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगी गई थी, लेट रिप्लाई फाइल हुआ था उसके कारण. बाकी हमारा इसमें P9 चैलेंज किया है हमने. कितनी देर में कर लेंगे? सर, मेरी तरफ से तो लास्ट टाइम हो गया था. मैं रिपीट करना, मुझे याद नहीं रहता. ओके सर, मैं रिपीट कर देता हूँ. कितनी देर में रिपीट कर लेंगे ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे. 5 मिनट लगेगा सर. अच्छा, आप कितना टाइम लेंगे बहस करने के लिए? क्या यह मुकदमा अगले 10 मिनट में अपन सुन सकते हैं? तो शुरू करिए. इसमें साहब 2 एफिडेविट मंगाए थे आपने, रीवा कलेक्टर और सीधी कलेक्टर. हाँ, आ गए वो आ गया. क्या लिखा उसमें? क्लियर हो जाएगी जी. पहले ऑर्डर शीट पढ़ें. किस ऑर्डर से बुलवाए? 13/3 से. जी सर. Let affidavit in collector Yuva be filed by tomorrow. Explain the reasons for not filing affidavit. जी, क्या एफिडेविट मांगा था? 22/2 का देंगे. You are required to furnish their report along with documentary evidence in terms of the orders of the commissioner and record itna in regard to the selection of patwaris which was made in pursuant to the examination by the itna. Let an affidavit be along with details of the compliance be produced before this court on or before the next date
इन इंग्लिश दीक्षा। चलिए क्या एफिडेविट है बताइएगा। पहले P9 पढ़ते हैं। कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड की क्या रिपोर्ट है, P9 पढ़िए फिर एफिडेविट पढ़िएगा। P9 पढ़िए। सर P9 में उन्होंने बोला था कि हम ऐसे कंप्यूटर डिप्लोमा वालों को पद से पृथक कर देंगे जिनका DOACC सोसाइटी से रिकॉग्नाइज नहीं है। ठीक, उन्होंने यहाँ तक कि 3-4 जिलों को लेके है, जबलपुर, पन्ना, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद की, इनमें कमी पाई गई है। इसके अलावा सर पेज नंबर 52 P9 का, इसमें कॉलम सीरियल नंबर 3 में लिखा हुआ है 5 जिलों जबलपुर, पन्ना, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नीमच में उम्मीदवारों का चयन निर्धारित 78 से कम होना पाया गया है। इसके अलावा सबसे लास्ट में देखेंगे सर 1 नंबर लिखा है जबलपुर, पन्ना, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नीमच जिलों के कलेक्टर इस कार्यालय के उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुपालन में निर्धारित किए गए निर्दिष्ट कंप्यूटर प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त चयन किए गए उम्मीदवारों को जांच पश्चात न्याय हित में सुनवाई का अवसर देते हुए इनका चयन निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा से न्यून प्रमाण पत्र अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों का चयन इतना नहीं है। ठीक है, इन्होंने 5 जिलों को तो क्लियर कर दिया, उनकी रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन 52 जिलों से उस तारीख तक रिपोर्ट नहीं आई थी। वी आर कंसर्न्ड विद सीधी एंड रीवा ओनली बिकॉज सीधी का हम कैंडिडेट हैं, रीवा में सेम डिप्लोमा वाला एक कैंडिडेट था, इसलिए हमने उनको तो बाकी तो 52 जिलों को भी हमको सीधी में, तो अगर सीधी में से कुछ लोग हट जाएंगे जिनकी सीधी से नहीं सर। देखिए क्या हुआ, सीधी में इन्होंने गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमें नहीं रखा, बोला आपका डिप्लोमा गलत है। ठीक, जबकि हमने वो दिया था कि ये हमारा मान्यता प्रमाण है, दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त है। दिल्ली सरकार से कि भारत सरकार से? नहीं सर, NCT दिल्ली लिखा हुआ था उसमें। अच्छा, तो उन्होंने कह दिया जबकि एडवर्टाइज में था शासन अथवा DOACC कोई सोसाइटी है उससे प्रमाणित। अन्य जिलों में इन्होंने भर्ती किया, केवल सीधी या 1-2 जिलों में इन्होंने नहीं लिया। हमने चैलेंज किया था उस समय सन 2006 में ही, उसका ऑर्डर आया हाई कोर्ट का कि इनको रखा जाए, यदि अन्य जिलों में भर्ती की गई है 3 महीने में जांच करके इनको रख लिया जाए, लेकिन उन्होंने माना नहीं। फिर हमने कंटेम्प्ट लगाया 12 में, उसका ऑर्डर 13 में आया। तो अब जो भी वकील साहब ने किया हो उस समय, तो उसमें इन्होंने एक एफिडेविट दे दिया और P9 लगा दिया कि हम निकाल रहे हैं सबको, आपको नहीं रखेंगे। देन हम सेटिस्फाई हो गए कि ठीक है अब सबको निकाल रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने निकाला नहीं। हाँ बस ठीक है, समझ गए अब आपकी बात। अब बताइएगा चीफ सेक्रेटरी से एफिडेविट फाइल कराएं कि किस किस को निकाल दिया आपने? दोनों एफिडेविट देख लें साहब। हाँ बताइएगा। Let I point out one thing, Lord. बाद में सुनेंगे आपको। कौन सा एफिडेविट है आपका, कब फाइल हुआ है ये? नंबर बताइए। डॉक्यूमेंट नंबर 9293। 9293 कब फाइल किया आपने? कंप्यूटर में है ही नहीं सर। लास्ट टाइम कंप्यूटर में नहीं था, इसीलिए फाइल में दीजिएगा। चलिए ये है एक, अब इसमें हमको नंबर नहीं मिला है, कौन सा लिखिएगा, है कौन सा 93 डॉक्यूमेंट नंबर 92 एंड 93 and 93/24 as were filed on 6/3/2024 and 6/3/24 have not been scanned and are not available on system. This is a serious matter. It is the responsibility of the IT section to scan all the documents as are received in the filing section and update them on the system. Action be taken against the delinquent by the registrar IT and report be furnished in the chambers within 3 working days. चलिए अब बताइए क्या लिखा आपने, किस किस को निकाल दिया? सर पहले कलेक्टर रीवा का एफिडेविट देख। हाँ पढ़िए ना, कलेक्टर रीवा का एफिडेविट पढ़िए। पैरा 2 मैडम। हाँ पैरा 2 ठीक है, वो तो उसके आप तो निकालने वालों की लिस्ट बता दीजिए। नहीं, निकालने का सवाल ही नहीं है साहब। अच्छा, सभी की क्वालिफिकेशन है? मैं वही पढ़ा। That's why I'm trying to point out something. क्या? So far the private respondents concerned, Lordship, the advertisement issued in the year 2004. There is no such circular to the diploma of DOACC concerned. I am participated in the year 2004. I have advertisement 2004 का। I have annexure आपने लगाया है? नहीं, आपके भरोसे थोड़ा रहेंगे, आपने लगाया। आप बताइए आपका एडवर्टाइजमेंट हमारे रिप्लाई में है सर, हमने रिप्लाई फाइल किया है। आपका रिप्लाई, रुक जाइए अभी आप। रिप्लाई हमारी रिप्लाई कहाँ है?
रिप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पॉन्डेंट नंबर 6 प्राइवेट रेस्पोंडेंट 6 का जी पढ़िएगा, इसमें कहाँ लगा एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट नहीं लिखा है, प्रमोद कुमार पटेल। प्रमोद कुमार हाँ, इसका एडवर्टीजमेंट के बगैर कैसे देखेंगे हम? सर इन्हीं की रिप्लाई में है, स्टेट की रिप्लाई में ही ये सारी चीजें। क्या ये कि 2004 का ये वो है, ये एफिडेविट जो फाइल किया है इसमें भी है सर। अच्छा, एफिडेविट में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है उन्होंने 2004? पैरा 3 में भी शेष पढ़िएगा, पैरा 3 answering deponent must humbly submit that the advertisement for the selection on the post of Patwari got issued on 21/9/2004. Copy of कहाँ किसका एफिडेविट पढ़ रहे हैं? कलेक्टर रीवा का एफिडेविट। वही तो हम भी देख रहे हैं, कलेक्टर हमें दिखाई नहीं दे रहा आपको? वो स्कैन नहीं है ना सर, स्कैन नहीं, दैट्स वाई। नहीं, हम फिजिकल कॉपी से देख रहे हैं। तो पैरा 3 में है सर। पैरा 3 में देखते हैं, चलिए। Answering deponent, ठीक है। the advertisement was issued on 21/9/2004 and subsequent so far the DOECC is concerned that the circular issued by the state government in 2005 in 6/8/2005 prior to आपने that। कब अप्लाई किया था? 2004 में, 5 में? 4 में ही आया था सर। मैं पॉइंट आउट ये करना चाहूंगा सर, ये एडवर्टीजमेंट एक्चुअली 2003 में जारी हुआ था, सभी जिलों के लिए कॉमन। उस समय ऑनलाइन नहीं था, डिस्ट्रिक्ट वाइज होती, किसी ने तुरंत फॉलो कर लिया, किसी ने बाद में फॉलो कर लिया, लेकिन इनकी फाइनल लिस्ट जो है 2006 जनवरी 2006 में ही ये भेजे गए हैं वहां पे ट्रेनिंग के लिए। और ये यहाँ पे दीजिए एडवर्टीजमेंट ऑफ द सो फार द डिस्ट्रिक्ट सीधी इज कंसर्न अनेक्टर P1 में भी सीन। अरे पहले तो ये रीवा की बात कर रहे हैं, रीवा तो देख लें। रीवा में जो गाइडलाइन थी उसके पहले पूरी भर्ती कर दी साहब। नहीं कर दी, तो बताइए ना किस तारीख तक कर दिया आपने भर्ती? एफिडेविट का पहले पढ़िएगा। रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 6/8/2005। ठीक है, एनेक्सर A2। इंस्ट्रक्शन इशूड बाय दिन। एक सेकंड रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। 6/8/2005 को संशोधित चयन सूची जारी हो गई। 12/9/2005 जर्मेंट टू मेंशन दैट द इंस्ट्रक्शंस इशूड ओनली ऑन इतना however the final result declared on itna the norms guidelines instructions could not have been followed in the district Riva as the same were issued इतना। अच्छा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब नहीं, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, ना मत करिए, भगा देंगे अभी यहाँ से। सॉरी सर, सॉरी। आपने कब अप्लाई किया था बताइए? इन्होंने सीधी में अप्लाई किया। हाँ ठीक है, सीधी में क्या हुआ? सीधी का रिजल्ट कब आया? चलिए सीधी का भी एफिडेविट देख लें। सीधी में हम जो ये गाइडलाइन है साहब, उसके P1 इज द एडवर्टाइजमेंट काइंडली सी। P1 यस, ये एफिडेविट के साथ जो लगाया है। नहीं, पिटीशन के साथ भी है ना, P1 इज 13/9/2005। 13/12/9 एक सेकंड, P1 किस पेज पर है ये? पेज नंबर 11 11 विज्ञप्ति की डेट है 12/9/2005। एक मिनट, एफिडेविट देखेंगे। एफिडेविट के साथ हमने पूरे, एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज। बारह 9/2005 को ये आया था रिक्वायरमेंट DOEC वाला जी, ठीक है। और हमारा एफिडेविट देखेंगे साहब सीधी कलेक्टर का। हाँ, उसमें मैंने पूरी जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको मैंने एक न्यायालय की सुविधा के लिए मैंने एक चार्ट बनाया साहब, देखेंगे। हाँ, इसमें जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं साहब, उनकी मैंने सब कंप्यूटर योग्यता जो वैलिडिटी है वो सब लगाई है। अच्छा जी बताइएगा। आपका तो सीधी का तो एडवर्टीजमेंट ही बात का है, 12/9 का है सर। इनकी जो एक गाइडलाइन है, इनकी गाइडलाइन नहीं, आप अपने बारे में रिप्लाई में लगाया है सर। हाँ, डॉक्यूमेंट नंबर 6686 2023 का। हाँ, इन्होंने एक लिस्ट लगाई है। क्या एक एनेक्शन R1 पेज नंबर 12 है सर इसका। एक मिनट पहले 9 देखें। पेज नंबर 12 जी सर, 6686 का पेज नंबर 12 है। इन्होंने 1 जुलाई 2005 को एक लिस्ट जारी की है कि किस कंप्यूटर डिप्लोमा को लेना है, किसका नहीं। एक सेकंड, दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्कुलर। आप पहले सर्कुलर बताएं R2 इज द सर्कुलर जिसमें क्वालिफिकेशन लगाई गई है,
वो R2 है 12 सितंबर 2005 का, उसमें इन्होंने ये कहा कलेक्टर्स की इस परीक्षा का समाधान करने के लिए अवगत कराया जा रहा है, ये कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। एक सेकंड, 29/8/2005 का, ठीक है, कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। पटवारी पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा पुनः वर्णित है। कुछ जिलों में कलेक्टर्स द्वारा परीक्षा की गई शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों की सूची उनके पास उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में कंप्यूटर, तो ये तो उन पहले ही डिक्लेयर हो गया था R2 के मुताबिक। आपने तो सिर्फ सूची दी है DOAE से इसी की, ये क्वालिफिकेशन का प्रिस्क्राइब हुई थी। आप मिसलीड क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक सेकंड क्लियर करिए ना। आप इसी में लिखा कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भ क्या है? 29/8/2005 का, ठीक है। ये पूरी करस्पॉन्डेंस प्रोड्यूस करिए, आप पूरी फाइल प्रोड्यूस करिए। लेट कंप्लीट फाइल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स एंड सेटलमेंट बी प्रोड्यूस्ड including the communication dated 29/8/2005 and because in annexure R2 dated 12 September 2005 it is mentioned that some collector that for the Patwari selection minimum educational qualification has been prescribed including 1 year computer diploma from a government recognized institution. Collectors wanted to know that they do not possess list of such computer training institutes and therefore how the computer diploma certificate is to be examined. In that reference, it is mentioned that Department of Information and Technology, Ministry of Communication and Information Technology, Government of India, within bracket DOEACC, Society, recognized qualifications will be acceptable, and then a list of such institutions was enclosed along with this said notification and circular annexure R2. Next para. Thus, submission made by the collector Riva on her affidavit that for the first time qualification of diploma in computer application was prescribed on 12/9/2005, whereas final result was declared on 6/8/2005 appears to be incorrect. Full stop. Respondent counsel is directed to call for the complete file from the office of the Commissioner Land Records and Settlement in which matter of recruitment of patwaris was dealt with. This letter respect of the district CD साहब। नहीं, सीधी को तो समस्त कलेक्टर करके उन्होंने सीधी लिख दिया है। वी आर नॉट कंसर्न विद इट, इसकी लैंग्वेज बहुत क्लियर है। पर इस कार्यालय का पत्र क्रमांक वो देखना पड़ेगा साहब। हाँ देखिए ना, बुलाइए ना। Let complete file be called within 7 days. List on 18 अप्रैल 2018 मत करिए, 23 अप्रैल 2024। चलिए, 1 साल के कंप्यूटर डिप्लोमा का प्रावधान पहले भी था। DOECC का 12/9। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बुला लीजिए, ऐसा नहीं है। ये हाई कोर्ट है, आप लोग बहुत आसानी से चलाना चाहते हैं। नहीं साहब, ऐसा नहीं। 24 या 25 को रख ले साहब। It is clarified that if the submission made by the collector Riva is found to be incorrect, then she may be hauled for contempt of this court, for which separate notices will be issued after pursuing the original file. ठीक है, चलिए। साहब वो बुधवार गुरुवार को ही लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, बुधवार गुरुवार को ही लगेगा, तो ऐसा कर। फाइनल हियरिंग लिस्ट है 140। चलिए, कोई बात नहीं। लिस्ट ऑन 24 अप्रैल। पूरी फाइल बुलाइएगा। हाँ सर, अभी कुछ नहीं, निकल लीजिए यहाँ से। कितना? हाँ, 7 केस ले लीजिए बस। हाँ, मोशन हेयरिंग रिक्वेस्ट के तहत सीरियल नंबर 85। नहीं, इट इज मेड क्लियर। सुनिए, आप इसको बुलाइए, इनको भी बुला लीजिए, सरकारी वकील साहब को। It is clarified. It is evident from annexure R2 that there was prescription of computer qualification from a government recognized institute.
and that has been clarified by the Commissioner Land Records by communication dated 12 September 2005. Therefore, that what is a government recognized institution? Therefore, when scrutiny was necessary, then scrutiny was to be made, then it cannot be said that communication dated 12 September 2005 will be prospective. It is to be seen on the date of filing of the application that whether the certificate was from a government recognized institution, as has been clarified in the circular date in the communication dated 12 September 2005 annexure R2. ठीक है? Bill number 85, motion hearing. बताइए. Another matter pertains to encashment of unleave. After retirement, principal sent the proposal to my lord district education officer, that is annexure P1, my lord. जी. He sent my lord entire my lord information along with this, my lord, the detail of the my lord unleaves. जी. इसमें अभी अर्जेंसी के जवाब तो आने नहीं इसमें. Replies a bit. इसमें sir, Let reply be filed within 4 weeks. List after 4 weeks. चलिए. Bill number 86. I have made a request in 86.1, my lord. My second appeal before the commissioner, my lord, for mutation was, my lord, allowed. And after that, my lord, that order was challenged. अलग-अलग थोड़ा ना सुनेंगे 786. No, my lord, I am just filed this petition, my lord, seeking direction, my lord, to mutate the land records, my lord, because they are continuously seeking time here, my lord. On who is seeking time? My lord, in connected petition, my lord, petitioner. बहस करिए उसमें कनेक्टेड पिटीशन में आप हैं क्या? Lordship. हाँ, अशोक सिंह वाले केस में आप बताइए मैरिट्स पर क्या है? तैयार हैं कि नहीं है? Lordship. तैयार हैं? कितनी देर में पूरा करेंगे आर्ग्यूमेंट? Lordship, 5 minutes. हाँ, तभी तो 5 मिनट है नहीं, 4 मिनट बचे हैं. Due to paucity of time, list this case on. Sir, order of the Commissioner River Division. 16 अप्रैल 2024 top of the list. Bill number 88. Sunil Kumar Mishra. जी बताइए. रेस्पोंडेंट्स के जवाब आ गए. हाँ? Respondents के जवाब आ गए. Award of the RLC is in favor of the laborers. They have not been. My lord, the counsel in this case is adjusted, if I may be allowed to. श्री, आपका शुभ नाम बताइए. Utkarsh Pandey for the. Utkarsh Pandey submits that counsel for the petitioner is on adjustment today. On his request, list this case on 26 अप्रैल 2024. Top of the list. Right. Bill number 91. My lord, हमने सबमिशन टाइम खत्म होला अगले सप्ताह में टॉप ऑफ लिस्ट कर दीजिए. फाइनल हेयरिंग के लिए लगा दीजिए, ज्वाइंटर भी फाइल हो जाए. टॉप ऑफ लिस्ट लगा दीजिए मोस्टली. क्या मैटर क्या है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपॉइंटमेंट में रिकॉर्ड आ गया क्या इसमें? रिकॉर्ड नहीं बोलवा. देखिए, लेट रिकॉर्ड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कंसर्न आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बी कॉल्ड फॉर लिस्ट इन द वीक कमेंसिंग 13 मई 2020. Bill number 105. My lord, the order under challenge is 18/3/24, lordship, annexure P3, lordship, which is a impugned recovery order, lordship. Recovery on account of Excess amount of pension, lordship. excess amount of pension. Yes, lordship. And the petitioner is also directed to deposit the said amount within 15 days, lordship. नहीं पेंशन नहीं है, ये भविष्य निधि का है ये. Yes, lordship. ये तो जीपीएफ की रिकवरी है भाई साहब. ईपीएफ की रिकवरी है ये. इशू नोटिस आपका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है. इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स, रिस्पोंड नंबर 2 and 3 on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. Lordship, in the meanwhile, that order may kindly be stayed, lordship, affecting operational. वो तो अपीलेबल ऑर्डर है वकील साहब ये. But lordship, in the meanwhile, let they file the reply, lordship, in this case, because in view of the. It is directed that no recovery shall be affected from the pension of the petitioner till next date, on petitioner furnishing and undertaking that if he fails in the petition
and he shall deposit the complete amount. चलिए. Number 107. The respondent number 1 filed an application before Tehsildar for mutation of the name on the strength of will of the father. Now, without making all legal representatives as party, now the Tehsildar directed for mutation of all names of all the legal representatives. Few of the legal representatives filed an application under Order 1 Rule 10 that has been allowed, and the will was also disputed. So Tehsildar rightly recorded all the names. Now, an appeal was filed by before the subdivision officer. The subdivision officer has set aside the order passed by the Tehsildar, which is confirmed by the commissioner. My submission is, Lordship, it is contrary to the provisions contained under section 1. Petitioner's contention is that names of all the legal heirs were recorded on the basis of the will of Shri Baijnath Airwar. No, Lordship, not on the basis of will. It was on were recorded succession. On succession भी कैसे हो जाएगा? As in form of 40 नामांतरण. Full stop. It is submitted that deceased Baijnath Airwar had left a will that is subject matter of adjudication before the civil court. Full stop. The order of mutation was challenged before the subdivisional officer, who cancelled the order of mutation, and thereafter in appeal the order of the SDM has been maintained. Next para. It is an settled principle of law that when a will is disputed, then Tehsildar or revenue authority has no jurisdiction to pass any orders of mutation, and they all are required to be subject to the findings of the competent civil court. Full stop. Accordingly, the order of Tehsildar cannot be upheld in the eyes of law, and thus there is no illegality in the orders passed by the subdivisional officer and the commissioner concerned. But this petition can be disposed of, directing the parties to maintain a status quo in regard to Opposite हुआ है, the Lordship. property. क्या हुआ है? तहसीलदार ने सबका नाम रिकॉर्ड किया था. नहीं हो सकता ना, सबका नाम भी नहीं होगा और वसीयत करता का वो हो सकता है, वसीयत ग्रहीता का भी नहीं होगा. नहीं होगा. उस पे जजमेंट है, मैं लाया. जब वसीयत है तो उसको सिविल कोर्ट से इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ेंगे. ठीक है, कर रहे हैं आप, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. क्या लिखा? Will maintain status quo in regard to the suit property and for a period of 45 days, and in the meanwhile the concerned parties may obtain injunction from the concerned trial court where the suit is pending in Lordship, not pending, it has to be filed. May file a suit and seek injunction from the competent trial court. Lordship, 2 months, 60 days में करें. The 45 days was more than sufficient. चलिए. Above terms petition is this, and all the entries in the revenue record will be subject to the outcome of that civil suit. चलिए. Second case is also same, Lordship. Same order कर दीजिएगा, dispose of कर दीजिए. The will of mother. नाम बदल दीजिएगा, लिख के दे दीजिएगा किसका नाम है उसमें. राम दुलारी. राम दुलारी का नाम है. Will of mother. ठीक है.